हाय एवरीवन, टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं वो इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट करेंसी पेयर, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट्स में करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती हैं। So I'll be talking about USD INR. USD INR is the most volatile traded currency pair. सबसे ज़्यादा volatile है because इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है एंड volatility बनी रहती है to make the money. And also when we talk about a currency pair USD INR, so one currency is USD, which is US dollar. Another is INR, which is Indian rupee. USD is the base currency, and INR is the कोट करेंसी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोटेशन करेंसी, राइट। तो इसमें दो करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती है फॉरेक्स मार्केट्स में, और भी करेंसी पेयर्स हैं। सो फर्स्ट वन इज़ USD एंड अदर इज़ INR. दिस इज़ बेस करेंसी एंड दिस इज़ कोट करेंसी। तो व्हाट डज USD INR मीन्स आपको कितना INR चाहिए, इंडियन रुपी कितना चाहिए टू बाय टू परचेज वन US डॉलर, राइट। एक US डॉलर को ख़रीदने के लिए आपको कितना INR चाहिए। सो दिस इज़ द बेस करेंसी। इसको ख़रीदना है आपने, दिस इज़ द बेस करेंसी। उसके लिए आपको कितना कोट करना पड़ेगा इंडियन रुपी में। सो दिस इज़ द कोटेशन करेंसी, राइट। सो दिस जब ये करेंसी पेयर्स में ट्रेड होते हैं तो और भी करेंसी पेयर्स है, एज आई टोल्ड यू, देयर मैनी डिफरेंट करेंसी पेयर्स, बट दिस इज द मोस्ट ट्रेडेड वन. सो अदर करेंसी पेयर्स आर यूरो USD. यूरो इज यूरोपियन डॉलर्स. यूरो USD, GBP, JPY. GBP is Great Britain pound and JPY is Japanese yen. सो बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल USD INR. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो फॉरेक्स मार्केट्स में ये करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती हैं, राइट। एंड इनको ट्रेड करने के लिए यू नीड वेरी लेस मार्जिन मनी। मतलब अगर इनका एक लॉट, यू कैन से एक लॉट जो 1000 के इक्वल है, उसको आपने ट्रेड करना है, सो यू कैन ईजिली ट्रेड वन लॉट इन जस्ट 2000 रुपीज़. 2000 लगते हैं. सो अगर आपको 5 लॉट भी ट्रेड करने हैं, सो विच इज़ 10,000, यू कैन ईजिली ट्रेड 5 लॉट्स in this because the margin money is very low and people easily trade this because the investment is very low, right? So what I was discussing कि USD INR को जो करेंसी पेयर्स के रेट्स, करेंसी के रेट्स इफेक्ट होते हैं. देयर आर मैनी फैक्टर्स बट टू मेजर फैक्टर्स आर, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है इन रेट्स को, एंड दूसरा है रिसेशन. इन्फ्लेशन मीन्स जितना प्राइस इकोनॉमी का हाई होगा, चीज़ों का प्राइस हाई होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हाई होगा, तो द मनी फ्लो वुड बी लेस इन द इकोनॉमी बिकॉज चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दैट एंड द फ्लो ऑफ द मनी reduces. It gets very slow because only the upper middle class can afford to buy expensive things, or the higher classes, upper classes can afford. So जब first factor which affects these currency rates is the inflation. जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उस कंट्री का, उस इकोनॉमी का, उसका प्राइस उतना फॉल करेगा, राइट. और जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतना उस इकोनॉमी का करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा. बिकॉज इन्फ्लेशन कम है, more and more people would be there to invest and to buy things, to do everything. So there will be continuous money flow and the economy strengthens when the inflation is low. And the second factor is recession. Recession में क्या होता है, ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़, बिकॉज GDP फॉल कर रहा है एंड देयर लेस ऑफ ट्रेड हैपनिंग. सो दैट इज़, उससे क्या होगा, जब कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगती है बिकॉज ट्रेड एक्टिविटीज़ आर लेस. तो इकोनॉमी जब डिक्लाइन करने लगती है, देन द फॉरेन इन्वेस्टर्स would also not want to invest in that kind of, in such economy. So here the recession continues. recession बढ़ता रहता है, मंदी जिसे कहते हैं बढ़ती रहती है, and इतनी job opportunities, there will be more layoffs and the foreign capital inflow would reduce drastically. So the investors of foreign currency would be very less or would be not there.
बिकॉज देयर इज रिसेशन, क्योंकि इकोनॉमी मंदी में चल रही है. द इकोनॉमी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटली, इट इज़ गोइंग टू अ रिसेशन फेज. So that is why these two factors are the main factors that affect these currency prices. And my purpose to tell this was जो करेंसी या जो फॉरेक्स मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द ओनली pair, currency pair I would suggest, USD INR, which is the most volatile pair, and the capital investment is very very low. And if you like the video, do share it and do subscribe the channel if you are new here. Thank you so much.